Hello. Righto. So should we start or should we wait? Yes, sir, we are live. We can start. All right. Good evening, everyone. Welcome to another YouTube live session by Pratham Test Prep on the new IPM mock strategy and new IPM mock strategy, as well as the which exam to give. Right. That's the very big question for all of us. That कौन सा एग्जाम दें कौन सा ना दें, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो. So we'll start off with the strategy session first, and then probably as and when we see more, now we are seeing more people coming on the YouTube page as well as on Facebook. So we'll first start with the big question, क्या करें, IIM Indore या DUJAT, right? So let me begin by addressing the panelists here. Bineet sir, how are you? How's Ranchi treating you, sir? I'm good, sir. And Ranchi is, sir, weather is awesome. I believe कि ये दिल्ली में जो नवंबर जैसा मौसम होता है वो सितंबर में, August last में, I'm feeling that kind of, thing. So you're wearing something warm right now, if I'm not mistaken. Wow, how lovely would it be to experience something like this in Delhi? Delhi is बादल आते हैं, hello बोलते हैं और बिना बरसे चले जाते हैं. आजकल तो यही हालत हो रही है. Yes, sir. I know that, sir. यहाँ पे normally you don't have to use fans. No fan, without fan, we are staying. Brilliant. Chaliye, how's Delhi? How's the Delhi heat treating you, Khanna sir? Great, sir. Great. I think both of us are sailing in the same boat, so nothing different though. So दिल्ली का वेदर सर ऐसे ही है, हाई करते हैं, एक जगह बरसते हैं, सब जगह नहीं बरसते, एक जगह अच्छे से बरसते हैं, water logging, and then it's up. That's the only thing which is happening. भर बारिश से दिल्ली comes to a standstill. Right. That's all. बहुत बढ़िया. So there are a couple of questions already pouring in. Sir, will Pratham provide us with new pattern mocks? Yes, the new pattern mocks are coming, will be released very soon. Our team is working on it, so it will be coming very soon, Purva. So please note that. And जितने लोगों ने अभी तक प्रथम के YouTube पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे विनती है, please subscribe to the Pratham YouTube channel and don't forget to press the bell icon. That's very important so that you don't miss out on any other videos that we when we put up on the YouTube page or do a live session of, right? So question, sir, Bineet sir. Yes, sir. IIM Indore या DUJAT, क्या देना चाहिए बच्चों को? सर, इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स रेस्पॉन्सेस हो सकता है, और मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है सर जो कि मतलब बहुत ही धर्म संकट वाला क्वेश्चन है. Because everybody has different set of abilities, everybody has different set of skills, and many people, they might think that I'm pretty well groomed in this particular section or in this particular section of maths and English. क्योंकि एक बहुत बड़ा एडवांटेज IPM में ये मिल जाता है सर, अगर मैं इंदौर की बात करूँ, that you don't have to give the examination for general awareness and current affairs. वो बहुत सारे बच्चों के लिए ब्रीदर होता है. But having said that, एक नॉर्मल चीज कही गई है हमेशा शुरू से कि जहाँ पे ज्यादा स्पेस हो इंसान को वहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंसान अकोमोडेट हो सकता है. बट व्हेन यू हैव वेरी लेस स्पेस, ऑब्वियसली गोइंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी अ बिट रिस्की अफेयर. सो हैविंग सेड दैट मींस ये अगर एक जनरल बहुत ही प्रैक्टिकल पैरामीटर लूं, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी प्रैक्टिकल पैरामीटर. व्हेन इट कम्स टू DUJAT, it offers you around 1000 seats, more than 850-900 seats approximately, right? But when it comes to IPM, we have 120 seats. अब बहुत सारे बच्चे इस पे जरूर कह सकते हैं 150 हाँ,
तो बहुत सारे बच्चे इस पे ये कह सकते हैं कि सर व्हाई नॉट मी बिकॉज आई गेस आई एम प्रीटी गुड इन दीज थिंग्स. आप मेरे मॉक्स में अगर देख लीजिए, आई एम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली गेटिंग 200 प्लस आउट ऑफ 400. आप देखिए सर, लास्ट के 3 मॉक्स में मैंने 240 में से मैथमेटिक्स के सेक्शन में आई वाज एबल टू सिक्योर 150 प्लस. राइट, आई रियली थिंक दैट आई एम वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. Yes, you are good in that section. Hats off to you. But at the same time, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि out of those 150 seats, 75 seats, 50% seats are actually reserved if you belong to a general category, and then you are left with just 75 seats. अब आप एक comparison कीजिए when you compare with DUJAT where you are having 500 odd seats for yourself, and here you are having 75 seats. आप खुद ही जज कर लीजिए कि competition ज्यादा tough कहाँ पे. So practicality को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा सर. It needs to be taken care of. So I am here to talk about this big question कि I am दें या DUJAT. तो मैं इस question को करने के बाद exit कर लूँगा. Then the strategy and everything else around it will be handled by Khanna sir and Bineet sir in their able hands. Khanna sir, what do you think about the big question, DUJAT or IPM? Sir, what Bineet sir has said is an apt point, right? ये तो एक apt point है, and there are many other things that one would have to evaluate. I believe एक पूरा chart बनता है, और सबसे बड़ा chart obviously what sir has actually talked about, right? इसके बाद ये भी देखना पड़ेगा how many number of applicants are there with respect to your IMs with respect to those. तो अगर मैं seats की अगर मैं बात करूँगा तो seats equal number ही आ जाएगा at the end of the day, because the number of students will be applying to Shahid Sukhdev, which is DUJAT, would be far more than this IM वाला. So वो एक पिक्चर यहाँ पे आता है, वो कॉम्पनसेट हो जाता है. दूसरा पॉइंट है सर इसकी, आई डोंट नो, आई पर्सनली बिलीव एक फीस फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज होती है. नाउ फीस इज समथिंग अगेन वन वुड हैव टू कंसीडर दिस पॉइंटर इन देयर. अनदर पॉइंट वन वुड हैव टू अंडरस्टैंड 3 साल के 5 साल. आई मीन दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन टू थिंक ऑफ. 3 years or 5 years, because getting into 3 years and getting into 5 years are two different things. Even if IM tells you that you can take an exit after 3 years, I don't think that is a fruitful exercise to come out after 3 years until unless you do have some excellent opportunity globe में या कहीं और पे बहुत अच्छी सी opportunity, तभी आप exit लेंगे, otherwise you're not going to take that. So यहाँ पे ये चीज भी आती है, प्लस आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 years वाला, 5 years वाला, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कितने हैं. क्या आप दोबारा से चाहेंगे 3 साल के बाद आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेके देन यू वांट टू गेट इनटू IIM? आई मीन देयर आर सेवरल मैट्रिसेस दैट वन वुड हैव टू थिंक इनटू सर. इसके लिए तो शायद परहैप्स एक वी कैन टॉक ऑन सेवरल पैरामीटर्स. आई एम श्योर यू वुड हैव अगेन मिलियन पैरामीटर्स टू डिस्कस ऑन दिस. एंड डेफिनेटली सर, वन मोर थिंग, आपने जो बोला सर, इफ आई ड्रॉ अ कंक्लूजन आउट ऑफ दैट, nothing against IIM Indore, 24 years का उसकी हिस्ट्री रही है, ग्रेट इंस्टीट्यूशन. 24 years में IIM Indore ने अपने आप को जितना इवॉल्व किया है, शायद आई डोंट थिंक सो कि एनी अदर IIM एक्सेप्ट द टॉप 5 IIMs उसने इवॉल्व किया होगा. बट एट द सेम टाइम आई बिलीव पर्सनली सर, एक स्टिग्मा हो जाती है व्हेन यू गेट इनटू अ 5-year कोर्स इन एनी पर्टिकुलर IIM. Getting out of that college after 3 years, it's a tough task. It will be a very tough call, right? But wherein if you look at JAT and all, I'm sure Ankit sir would also agree to this, that after doing their BMS from Shahid Sukhdev, I believe 60%, sir, if not less, more than 60% of batch is either into some IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Harvard, Wharton, Princeton, Ivy League universities. So it creates a lot of options as well. Correct. So that is there, but the big question still remains कि दोनों में से क्या दें बच्चे, because solution तो अभी तक मिला नहीं है. So I'll just give you my take on this, right? And then I would probably leave for the students and parents to decide. पहली चीज, जैसे सर ने बोला, सीटें DUJAT के थ्रू आपके पास ज्यादा हैं, राइट? आप शहीद सुखदेव की बात करें तो 93 जनरल कैटेगरी सीट्स, प्लस आप इसमें BFIA की भी अगर आप सीट्स डालेंगे, that makes it about 140 odd, 135, 140 odd seats for general category in Shahid Sukhdev College of Business Studies itself. And these are the general category seats. अगर आप SC ST सबको मिला लें तो Shahid Sukhdev has about 203 and BFIA in Sukhdev has about another 90. You add another 10% of the economically weaker sections, you have a huge number of seats available to you. Right. But point ये है कि is it Shahid Sukhdev versus IIM Indore? Maybe right. I would probably go one step further. You can even include Deen Dayal Upadhyay and Keshav Mahavidyalaya for BMS course per se, and then compare it to
IIM Indore. So पहला क्वेश्चन सीटें DUJAT में ज्यादा हैं, so मेरा भी टिल्ट DUJAT की तरफ ज्यादा होगा पहला. दूसरा पॉइंट है कि क्या आप IPM क्लियर करने के बाद आपकी सीट गारंटीड है? The answer is no, because you will still have to give the interview. इंटरव्यू में भी आपको you are given about 35% weightage for your interview round, which is a huge amount, which can either get you there or get you out of there, right? प्लस जितने ही बच्चों ने IIM इंदौर दिया है उन्होंने शायद IIM रोहतक भी दिया होगा, and I'm sure the kind of results that we've had, they already would have got a call letter from IIM Rohtak also already. So you already have an IIM in your grasp. Now you're talking about a DUJAT. DUJAT के अंदर it's more than 30 years old program, great reputation in the industry. IIM, so does IIM, right? So DUJAT में आपने अपने entrance दिया, that is it. There is no further interview or group discussion rounds this year that they've added for selection, right? So you are pretty much there, right? So आप लोगों के पास मेक और ब्रेक्स जो राउंड है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम ही है DUJAT के अंदर, एंड IIM के अंदर यू स्टिल हैव another interview round to worry about. It's actually a video-based assessment, sir. Wherein this year 85% weightage is for the written examination and 15% weightage. 15% is for interview, but that is also an absolute marks, ना sir? Definitely, sir. अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है इंटरव्यू के अंदर, you are, I mean, that option is gone, and so is DUJAT because it's clashing. जिन बच्चों का शिफ्ट 1 में है DUJAT, right, वो इजीली दोनों एग्जाम दे सकते हैं, उनको देना भी चाहिए. शिफ्ट 1 can give both and should give both, right? Can give both and should give both. Shift 2 mein, if the center is very close, maybe you want to give it a try, but I would still say it's not possible. I would probably ask only the shift 1 of DUJAT to give both. Jinka shift 2 and shift 3 hai, I would probably suggest that you take the DUJAT exam for the IPM. So that's the bigger question. Any questions that students might have, please feel free to share. Vatsala says, sir, my DUJAT exam is in shift 3 and IPM MAT will get over at 3:30 and it takes 1 hour to reach the DUJAT center. So does anybody know what are the shift timings? Sir, it will be 8 to 10, 12 to 2 and then 4 to 6. राइट. सो 3:30 अगर खत्म होता है तो शायद आप 4 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो मे बी इवन IIM इंदौर का एग्जाम इज व्हाट टाइम सर? Sir, 2 to 3:30. 2 to 3:30. So she has half an hour to reach the center. 8 to 10 and then 12 to 2. शिफ्ट 2 का तो प्योर क्लैश है सर. जिनका शिफ्ट 2 इनका प्योर क्लैश है. शिफ्ट 1 कैन स्टिल गिव इट अ ट्राई. Shift 3, if the center is close by, probably can give it a try. So shift 3 is 5 to 7, sir. So shift 3 is 5 to 7. Okay, so sorry, sir. 5 to 7. Okay, shift 3. And Asta saying there is no shift 1 in DUJAT. Only shift 2 and 3. तो किसी को तो shift 1 भी मिलेगा अगर shift 2 and 3 दिया है तो. Yeah, so if it's gate closing, so shift 2 can also give it a try. It's अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं, please be my guest, give both, keep all the options open. But अगर आपको दोनों में से एक चूज करना है तो मेरा सजेशन है, and I'm not saying आपको सजेशन मानना चाहिए, but मेरे after evaluating all the possible options, I am probably saying give DUJAT more than IIM Indore. So any other questions that you have कि क्यों नहीं IIM Indore? तो आप पूछ सकते हैं. If you are not clear as to why not IIM Indore, then you can definitely post your query. Okay, so there is a shift 1 is there, but it is for PG students. Okay. For PG1. ओखला से रोहिणी 1.5 घंटे में ऑन अ मंडे. टफ बैट है. दिल्ली का ट्रैफिक इज प्रॉब्लम.
See, and it is also understandable कि जो प्रथम के students है outside Delhi के हैं, जो पानीपत, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, चंडीगढ़ के students हैं, they would definitely prefer IIM Indore over DUJAT, and that is where the tilt will also be. Right, so those kids can take a call of giving IIM Indore, but again, DUJAT is DUJAT because I mean it's just more return on investment is much better. The seats are more, and the selection is based on entrance itself only. Yeah, Ekamjot, if your centers is close by, you should give both. If they are far off, you can try, but preference should be more towards DUJAT than IIM Indore. "19 kilometers, half an hour, 45 minutes is difficult to cover in between the two, but okay. So, Bhavishya says, sir, why not Indore? That's the question that has come. Sir, it entirely depends upon Bhavishya. The reason is that Bhavishya, let me share something with you. Last year, approximately 19,000 students appeared in the IIM Indore examination. Right? Correct. Now, it clearly depends upon how well prepared you are. That actually factor will decide that should you go for Indore or not. Out of 19,000 people who appeared in last year in the examination, approximately 3,500 students, they got negative marks. Means their marks was less than 0. They could not even score positive marks. Plus एक number भी नहीं आया, 0 से कम था. That was negative raw score. इस बार अगर आप check करेंगे notification, it is clearly mentioned that assessment उन्हीं बच्चों का होगा stage 3 पे who are having positive raw scores. Now also let me tell you one thing. Last year approximately 3,000 students got negative raw score, and there were approximately 3,000 to 4,000 students who got their marks in the single digit. Right? Single digit marks थे. आप इसी से अंदाजा लगाइए कि when MCQ section में out of 160 marks cutoff is going 31. Short answer में out of 80 marks cutoff is going to be 25, and verbal ability में out of 160 cutoff is 71. So this is something double digit में जो scores हैं, approximately only 8 to 9,000 students were there who could score in the double digit. Now, how well prepared you are for the examination, that will decide whether you should go for Indore or you should go for DUJAT. Because why not Indore? Indore is a big. Indore के साथ में अगर pros अगर count कराऊं, Indore is a good brand. Definitely good package. Right? IIM का नाम है उसके साथ. It is a part of IIM. बहुत सारे बच्चे CAT देख करके जाते हैं. But right at this point of time, you need to assess how well prepared you are. आपका preparation level कैसा है? क्योंकि आप level of toughness कभी भी question compare करेंगे DUJAT से IIM Indore का, you will always find that IIM Indore the questions will be difficult. Yeah. Right? Now, if you think that you can get a rank, all India rank 43 or 42, right? Please go for IIM Indore. Nobody is stopping you. Because you know your level well, but if there is any kind of dilemma or any sort of ambiguity, right, then definitely you should go for DUJAT. So right. There will be a couple of questions, right? जो आ रहे हैं. Sir, Khanna sir, you want to give your take on why not Indore? Right, Benny sir, वही हम analysis जब लेते हैं IIM का, that's what we generally realize that it's a different game altogether. It's not about just solving the questions; it is also about leaving the questions. तो उसका जो cut off, what Benny sir has rightly mentioned for the last year, it generally is been replicated every year, sir. Yes. It's replicated every year. A certain percentage, which is 10, 15 to 20, and even 30% of the students would get either negative or a single digit. Either negative or a single digit in there. 30% student तो वैसे ही prepare होकर नहीं जाता है सब. So that is how one would have to look into. So instead of looking into whether the college is good or not, that's a brilliant idea, Vinit sir. Whether I am prepared or not, that is one would have to sincerely look into how prepared I am for the two papers in there. तो इन दोनों का एक evaluation करना पड़ेगा, and then one can surely look into, because as we say that जो business awareness वाला portions होते हैं, वो portion generally आपके लिए एक accumulating elements लेके आते हैं. So if you believe that case in there, please go ahead with that. That is what. यार किसी का जीके बहुत ही ज्यादा खराब है, तो शायद वो उसको DUJAT नहीं देना चाहिए. Right? But अगर आपका strong point है, then please, again, jokes aside, why not Indore? I would probably say, I mean, it's a tough call for us as a company as well. Let me say that, because अगर हमारे बच्चे कम IIM Indore में पेपर लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा अगले साल के लिए कम आएगा.
right? So it is a tough call and it's a tough thing after due diligence is what we are sharing, right? So it takes a lot of guts to say कि ये मत दो और ये दो, right? And where both the things are pretty much 19-20 का ही फर्क है, right? And they are very good brands in their own right. Why not IIM Indore? I would say क्योंकि DUJAT के अंदर बहुत ज़्यादा सीटें हैं, right? Even if you don't get Shahid Sukhdev, you're still getting a DU college, right? And DU की reputation overall इंडिया में और इंडिया के बाहर काफी अच्छी है. So even if you want to go abroad after a course from DU, you can, right? And दूसरा return on investment is great. बहुत ज्यादा अच्छी है DU की as compared to IIM Indore. Not the entire DU, but Shahid Sukhdev College of Business Studies for sure. Secondly, आपको you will still have an advantage of interacting with students across Delhi University, right? You will have that chance. जहाँ पे IIM इंदौर में आप सिर्फ वहीं पे रह जाएंगे, प्लस दिल्ली का एक्सपोजर जो है वो इंदौर में शायद आपको ना मिले, शायद. It's a question mark, but yeah, it's a great band. I'm sure they will be doing their best to give you good summer internships, summer placements and everything. But जो दिल्ली का एटमॉस्फेयर है, दिल्ली का जो एक्सपोजर है, जो मिल सकता है बच्चों को, वो शायद IIM इंदौर में आपको नहीं मिलेगा. प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू गेट थ्रू सुखदेव फॉर BMS और BFI, आपके पास फिर भी चांस होगा टू राइट CAT or write GMAT and get into better colleges than IIM Indore also. But once you spend those 5 years in IIM Indore, you're not looking at doing another MBA, right? That degree is sealed. I'm not saying IIM Indore is a bad brand to have on your thing, but an IIM Ahmedabad or Bangalore or Calcutta or FMS or maybe to a certain extent SP Jain or ISB Hyderabad would probably be a notch better than IIM Indore. Right, so that is my reasoning for why not Indore. So Nandini says I have cleared IIM Rohtak. Is it better than Sukhdev? I would say no. Between Rohtak and Sukhdev would be hands down better. Manvi Bhatt, Badarpur to Noida possible beta. You can give it a shot. एक नोएडा एक फरीदाबाद है बेटा. There is an FNG corridor. Faridabad Noida Gurgaon corridor. Take that and reach Faridabad as soon as possible as you can. Yes, Shubman, they will definitely lose good students. That is for sure. That is why we expected all of you to write mails to them so that the exams don't clash. But they didn't listen. Navya Chavla, sir, I'm getting eco honors in DU. Then I should go for IPM. Yeah, IPM, beta, abhi eco honors kaise mila? Cut off hi nahi hai. How can you assume that you're getting eco honors in DU? Don't expect that, please. That's a wrong assumption to have. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर. जब सब DUJAT देंगे तो कंपटीशन कैसा होगा? How can some person expect to get into Shahid Sukhdev College of Business? ये कंपटीशन तो IIM इंदौर में भी है यार. अगर बढ़ जाता है, I mean, you want to be the devil's advocate and say कि सर जब सबको DUJAT दे रहे तो मैं IIM इंदौर दे के निकल जाऊंगा. It's a complete guesswork that you can go ahead and do. Sir, and this COVID has actually added more number of students who are prepared. तो अब पिछले साल से ज्यादा होंगे. And one of the students is asking कि इंदौर में सर क्या नीचे गिरेंगे? नीचे नहीं गिरेंगे बल्कि ज्यादा बढ़ेंगे. क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है. मैथ्स का जो है सेक्शन आधा कर दिया है. तो out of that reference in there, वो 10 question ही main deciding factors. That's what one would be looking into. बिल्कुल सर. I mean timing को आपने 25% कम किया है. 25% questions को आपने 50% कम कर दिया है. That simply shows one thing, that per question now you are having more time and hence better chance of getting that question right, and hence the cutoff is likely to go up only. And then this is a severe possibility that there is not going to be dilution of questions. Question dilute नहीं होने वाली. Then the interview factor. So what I understand from this scenario and the new pattern of IIM Indore is कि जैसे IIM Rohtak ने कितनी सारी calls दी, right? A lot of it will depend upon how you perform in the interview. A lot of it will depend upon how you perform in the interview. Correct. Ankit sir, it's a video assessment है, which is again in lieu of the interview. That's what I am sure you are talking about. Because interview की जगह video based assessment है. That's I'm sure you are talking about the same thing in there. वो video based assessment जो होगा ना, वो भी अपने आप में 15% weightage तो है ही है उसका. So that 15% will also be marks मिलने हैं. या तो 1 नंबर मिलेगा out of 15 या 15 out of 15 मिलेंगे. 15, बिल्कुल सही है.
एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है सर, विच इज अ वेरी बॉटम लाइन, इट्स अ वेरी वेरी रियलिटी चेक कि क्यों बच्चा डिसाइड करे कि उसको IIM इंदौर देना चाहिए या DUJAT देना चाहिए, एंड दैट रियलिटी चेक लाइज इन योर मॉक स्कोर. अभी तक 8 मॉक्स आप दे चुके हैं, राइट? आई सपोज कि कम से कम 8 की तो हमने एनालिसिस किया, कल 7 और 8 का एनालिसिस कल हुआ. आपने अगर 6 मॉक्स भी दिए हैं, प्लीज असेस योरसेल्फ. If you are in the range of 145, 164, 163, 159, 160, इस रेंज में है, I would suggest you to go for DUJAT. If you're in the range of 225, 200 plus, 210, 225, 230 and so on, you might go for IPM Indore, right? ये बहुत बड़ा reality check है कि आप कितने well prepared हैं इंदौर के लिए. Your mock score, it is a very big indicator. So take your decision wisely. Yep. So कोई और क्वेश्चन है? अब मैं यार गाइस डोंट आस्क अस क्वेश्चंस कि 40 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे. दिल्ली ट्रैफिक आप लोगों को पता है यार, अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आई डोंट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू. So I'll quickly shift to the competition, the question. Sarthak, sir, traveling time is 30 minutes between exam centers and 2 to 3:30 is IPM and then DUJAT is third shift. Should I give it a try? Yes, you should, Sarthak. Sir, how can we expect the number of students will drop for IIM? Yes, you can assume that if people have to pick, the number of students for IIM Indore would drop. क्या postponed होने के chances हैं या shift change करने के chances? You can send a mail to DU and figure it out. Yeah, I mean, it's quite unfortunate that 2 big universities have decided to clash their timings as well as the date. Thankfully, CLAT जो है वो postpone हो गया, so very grateful to the consortium. And sir, regarding postponement ना सर, हमें एक चीज और देखना पड़ेगा. If I'm not mistaken, JEE Mains is from 1st of September से 6th of September, right? If I'm not mistaken. So if NTA is able to conduct this exam successfully, there is no question of postponing DUJAT. Correct. Postponement के chances बहुत मुश्किल हैं. Sir, my IIM center is in Mundka and DUJAT center is in Gidorni. One end to the other, 40 kilometers apart. I think you should stick to DUJAT, Palak. Sir, which is better, IIM Rohtak or St. Xavier's BMS? I would say IIM Rohtak. State level university versus the central level university will be probably there. Nandini is asking, sir, IIM Rohtak aren't we more secure than Sukhdev? Yeah, IIM Rohtak is one of the baby IIMs, the newer IIM, so it's not even in the same league as the IIM Indore. So you can pretty much understand why we are suggesting Sukhdev over IIM Rohtak. अभी तो आपके पास रोहतक हाथ में है और DUJAT अभी हाथ में नहीं आया. So what you should do is, if you already have IIM Rohtak in your hand, pay the fees, block your seat. If you get through Shahid Sukhdev College of Business Studies or Keshav Mahavidyalaya or Deen Dayal Upadhyay, then we'll evaluate whether you want to let go of Rohtak and take these or continue with Rohtak. So अगर अभी आपके हाथ में रोहतक है तो उसमें फीस देके अपनी सीट ब्लॉक करवा लीजिए. Ayush, sir, DU also has an interview? I don't think so. They have an interview yet. Ayush also saying I'm getting 260 and IPM I'm getting, as per new pattern, I'm getting 140, 150. वो जो स्ट्रैटेजी होगा तब आप डिस्कस कर सकते हैं. Yes, Anushka, institutions that are going to teach you management are unable to manage times and dates. That's quite an accurate assessment. That earlier it used to be on Sundays, now it's happening on a Monday when they know exactly that the traffic is going to be bad. Had they done it on Sunday, probably you could have still tried to zoom your car and probably reach the center in the shortest possible time. It's a Monday. It is very difficult looking at the Delhi traffic to reach from one end to the other. Correct. God forbid, if it rains that day, then to thank you very much. इसका mismanagement का सर एक और reference हो सकता है क्यों? Because IIM Indore is actually conducting the CAT paper as well. तो उसके लिए भी उतना preparation उनको करना है, तो वो division तो हो ही जाता है because they've got limited resources in there and they are the convener this time. तो CAT का prepare करने के लिए यहाँ पे भी उनको division करना है. तो take it as a test कि IPM वो test कर रहे हैं, then it is going to be CAT paper for them. So expect CAT questions in it. Expect CAT questions in it. Correct, sir. That's what we're going to discuss about, sir. That's what we are expecting. CAT questions. I hope this is clear to everyone. And
you can take your pick here in case you need further guidance to help you choose which one. We are available on our Telegram handles. You can drop in a text to us, and we'll probably help you and take a better decision. I've spoken to a lot of parents already on this, so all my team members are available to help you decide which one to take and which one to probably give it a miss, right? So yeah, DUJAT की strategy हम बाद में बात करेंगे. We'll do it closer to the date, right? And probably do an analysis session after the exam. Yeah, Siddharth Malik, the last 2 mocks will be on the new pattern of IPM. Sir, video based assessment, what is absolute score? बेटा video based assessment में जो भी नंबर आपको मिलेंगे, जैसे सपोजिंग आपका जो IPM है जो 400 नंबर का है, उसको रिड्यूस करके 85 के वेटेज पे लाया जाएगा, राइट? एंड जो वीडियो बेस्ड असेसमेंट के मार्क्स हैं, दे विल बी एब्सोल्यूट. मतलब जो अगर आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 15 है तो 10 आउट ऑफ 15 ही होगा, उसको रिड्यूस करके कहीं पे नहीं करा जा रहा. सो that is what we mean by an absolute score. But your overall entrance score is being reduced from what you've got out of 400 to what you've got out of 85. Can a Pratham mock student get the... I'm sure you can get in touch with the Asif sir, and probably he can get in touch. They put you onto the... Put you in touch with us. Ayush Malik sir, I'm a Pratham non-center student, test series. I'm sorry if you have answered this question previously, but is 290 a good score for DUJAT? Yes, it's a good score. In our mocks, a 290 score is pretty decent. Yeah, the mock IM mock 9 and 10 will be on new pattern. Sir, any other suggestions that you have? I'm sure when you're talking about the... Sir, suggestion एक ही है, जैसे कि I guess अनुष्का गोयल ने कहा कि it is ironical that institutions that are going to teach us management cannot even manage dates. सबसे पहले तो सर मैं थोड़ा सा इस पे डिसएग्री ये करूंगा कि पूरी दुनिया की मैनेजमेंट गड़बड़ हो चुकी है पिछले 5-6 महीनों में. We should be actually thankful to IPM Indore and at the same time NTA that at least they are conducting the examination. Conducting the exam, yes. Exams हो रहे हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी के examinations they are pushed. तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप उनको ऐसे you cannot just promote them without taking examination. We should be thankful to the technology. We should be thanking to the technological platform, and we should also be very grateful and thankful to all the institutions who are at least conducting their examinations and just not enabling you and not probably a saving grace would have been they should have conducted an online home-based proctored exam. उससे भागा दौड़ी का भी chance बच जाता है, and we can expect that from NTA because it's an agency built set up by the government of India. And I'm sure they would have had the skill set to do an online proctored exam. उसमें बना देते हैं, and it would have been a easier thing for everyone. कर सकते थे. So that is the only thing, they're conducting the examination, but dates clash नहीं होने चाहिए. So that is also that actually pains me a bit as well. Yeah, I mean it was quite a bummer from our side because जब पहले CLAT, IPM and DUJAT were all 3 on the same date. We were flooded with questions. Please, क्या करें? Thankfully, CLAT ने अपने लिए वो problem हटा ली, but the other 2 have not budged. So it's quite sad from the bodies that they couldn't, figure out a consensus amongst themselves. ये तो वही चल रहा है कि यार we are bigger than the others, so why should we change? The other one should change. Maybe that's the ego getting involved. Right. So now it is up to you to take up the IPM strategy session, new IPM strategy session. So over to you guys, and thank you very much for letting me in on a session like this, sir. Thank you very much. That was an enlightening experience for all the students over here. Tough we can understand that. Correct. It's a tough decision, but I'm sure with the wise words, they'll be now in a position to identify whether to go left or to go right in there. So a clear-cut direction जरूर मिल गया होगा, sir.
Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. All the best, Khanna sir and Biren sir. Thank you, sir. Thanks. So, guys, let us now come to very specifics of this strategy session, and that specific thing is how to conduct yourself, or how to attempt the new pattern IIM Indore examination. So this is the basic agenda for today's session from now. Now this question is an old question now, sir, whether we should go for IIM Indore or DUJAT. ये question खत्म हो गई, right? अब हम शुरुआत करते हैं that how to conduct yourself for the strategy session or for the IIM Indore को actually कैसे लेना है. So can I just request Praveen sir to just briefly introduce them about the new pattern? करेक्ट सर इस पैटर्न की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक बड़ी चीज बात कहना चाहूंगा. डू नॉट पैनिक स्टूडेंट्स. इट इज नॉट एट ऑल अ सिचुएशन टू पैनिक, राइट? आप ये कह सकते हैं सर यू आर अ फैकल्टी सर देयरफॉर यू आर नॉट पैनिकिंग. नो, प्लीज अंडरस्टैंड बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी सक्सेस और मेरी सक्सेस, दोनों की सक्सेस डिपेंडेंट है, राइट? माई सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन यू. सो मेरा पैनिक होना भी उतना ही बनता है जितना आपका, बट आई एम नॉट पैनिकिंग बिकॉज आई नो यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट इट डन, राइट? और इस चीज को विनीत सर भी अग्री करेंगे, क्योंकि जब भी हम मॉक्स लेते हैं हम इसी चीज के ऊपर बार बार बात करते हैं कि आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए. यू शुड नो द क्वेश्चंस देयर. क्वेश्चन कम ज्यादा होने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? सो लेट मी टेक यू थ्रू द नोटिफिकेशन दैट दे हैड. There it comes with a notification, boys and girls. I hope everybody would have gone through this notification, right? So let me share one idea with you that how this is talking about, and I would then request Vineet sir also to share a little idea. So we are talking about the stages, different stages, stages 1, stage 2 and stages 3. So इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो इस स्टेज की बात कर रहे हैं where there the question have been restructured. अब restructuring का मतलब क्या है? Obviously one can see number of questions 20 here. When you talk about the short answers this is 10, and when we talk about verbal ability that comes out to be as 30. राइट अभी जैसे विनीत सर ने कहा कि जो टाइम कम हुआ है, टाइम 25% कम, टाइम कम ज्यादा नहीं हुआ है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन रिड्यूस्ड मोर. तो अगर ऐसा है तो अब हमारे पास नंबर, जो एक क्वेश्चन को करने का टाइम हमें मिल रहा है, व्हाट आई कैन सी सेफली इज अ 1 minute, राइट? व्हाट आई कैन सी सेफली इज ओवर 1 minute, राइट? सो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट आई कैन सी दैट थिंग्स इज, अगर मेरे पास 1 मिनट है, 1.25 मिनट है, 1.5 मिनट है, irrespective of that, don't worry about that condition in there. But इस समय जो देखना है, what would be the quality of questions, right? And even Vineet sir and I, both of us would agree on this condition. और Vineet sir ने पहले ही आपको hint दे दिया है कि don't worry about the change or the quality of questions. The quality of questions would remain the same. Vineet sir, I hope you would agree with that. Definitely sir. I mean the simple example is जो आपने सामने स्क्रीन पे दिखाया सर 20 क्वेश्चंस 30 मिनट्स एमसीक्यू के लिए. लास्ट ईयर तक क्या होता था सर? इट वाज 40 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स, 1 मिनट पर क्वेश्चन, और उसमें भी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता था. यहाँ पे यू आर गेटिंग 1.5 मिनट्स यानी 1.5 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन. So means how come, बस लॉजिक से भी सोचिए, how can somebody expect a dilution of the question? करेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है. पिछले बार 1 मिनट में एक क्वेश्चन, इस बार 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन मिल रहा है. when the most striking part is QA short answers. Last year you used to get 2 minutes per question. Now this time you are getting 3 minutes per question. right. By any chance you cannot expect dilution in the standard of questions, and the verbal ability remains same, 1 minute per question. So there is no chance, there is no question of diluting the level of difficulty of IIM Indore. Yes, करेक्ट. ना ही डाइल्यूट होगा, ना ही द क्वालिटी वुड गो अप ड्रास्टिकली. बॉयज एंड गर्ल्स, इस बात को भी ध्यान रखिए कि मान लीजिए इधर टाइम ज्यादा हो गया है, फॉर एग्जांपल पहले 2 मिनट था, 3 मिनट यहाँ पे हो गया पर क्वेश्चन, सो दिस क्वालिटी ऑफ अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वुड गो अप. नो, दैट इज आल्सो नॉट गोइंग टू हैपन, एंड दैट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इट, राइट, बाय एनी चांस. Okay. Another pointer that you need to understand over here is, obviously these are the marks in there, the negative marking, and for the short answer हमारा negative marking नहीं होता है. Everything else remains the same in there. But you also need to understand is, once you will see the new mock, the 2 mocks, the one that we are talking about, एक बार आप जब वो 2 mock करेंगे, आपका comfort level अपने आप आ जाएगा. So इसमें कोई change करने वाली बात आपकी है ही नहीं. Nothing to work in there. Obviously Vineet sir and I, we would come down again to help you out with the new mocks in there. उसका कैसे करना है, क्या करना
चाहिए था, with the last mock you can obviously change in there. इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है. सबसे पहली चीज तो ये हटा दीजिए, there is something panic in there. Moving on to the third stage that you can identify in there. There will be a shortlisted element, and then after this shortlisting you would get into a video based assessment, right? Boys and girls, अभी के लिए आपको इस video based assessment की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है. Please do not worry about video based assessment. Complete video based assessment would be assisted by us. Complete. Need not to worry at all. ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी. And I can assure you, if you are a Pratham student, आपका जो quality of video होगा, that will be one of the best qualities that you would ever get in IIMs, right? इस बात का मैं आपको अभी भी assure कर सकता हूँ. So do not worry about that video. सर वीडियो कितने मिनट का, क्या टॉपिक होगा, कैसा टॉपिक होगा, ये सारी चीजें छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम आगे कर सकते हैं और आगे हम करेंगे. And I'll help you out. And even all the faculty members would help you out how to contribute on that thing in there. We have got the entire system in place. So इस बात में तो अभी ध्यान देना ही नहीं है. एक बार आप पेपर दे लें, उसके बाद आपके पास enough time होगा. You will have enough time, at least 10 days. You will have at least 10 days to prepare for this video, and it's our responsibility to assist you on this. So उस बात की आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करें. देन आता है कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, कितना परसेंट उसका कन्वर्जन होगा. दिस इज व्हाट दे हैव एक्चुअली डिस्क्लोज इन देयर. एक बहुत अच्छा पॉइंटर है. इस कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को किस तरह से इवैल्यूएट किया जाएगा, स्कोर की वेटेज कैसी होगी. बॉयज एंड गर्ल्स, इन्होंने सिर्फ आपको ये एक कर्जरी व्यू दिया है. इसमें आपको अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर 50 है और इधर 25 है, सो आई विल पे मोर अटेंशन ओवर हियर. ऑब्वियसली द केस इन देयर. आपको पता है यहाँ ये 30 मिला के आता है और ये 30 मिला के आता है. सो ऑब्वियसली यू नो दिस, इसका 25-25 रेशो होगा. और इसके अंदर आपके पास शॉर्ट आंसर्स हैं. शॉर्ट आंसर्स में आपके पास 30 मिनट्स हैं. तो इसमें आपको भी कोई कैलकुलेट नहीं करना है. ये सिर्फ एक इंडिकेशन है. ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि जो भी चीज ये लोग IIM कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस. बॉयज एंड गर्ल्स, अभी जैसे विनीत सर ने आपको एक चीज बताई थी कि आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड है कि नहीं. इस चीज की चिंता कीजिए कि ये हो रहा है. दिस इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट. और इसी चीज को दर्शाने के लिए ये वाली एक डॉकेट भेजा गया है जो ये साफ साफ बताता है कि हमें ये भी पता है कि पेपर कैसे कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, यहां तक हमें सब कुछ पता है. सो इफ दे नो एवरीथिंग अबाउट इट, प्लीज ट्रस्ट देम अबाउट दैट. नथिंग इरैटिक इज गोइंग टू हैपन. कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. करेक्ट. दिस इज व्हाट द पॉइंटर इन देयर. उसके बाद आपका सिलेक्शंस होगा और उसके बाद दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट score which will be 85% and the video based assessment that will be a 15%. So total score को absolute score को नीचे करके उसे 85 and 15 किया जाएगा और फिर इस बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होंगे. बॉयज एंड गर्ल्स, अगेन अभी मैं फिर से आपसे कहता हूं ये 15% पे आपको अभी कोई कंसंट्रेट करना ही नहीं है. प्लीज कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स इन देयर. और जो दो नए मॉक्स आपके न्यू पैटर्न्स पे आ रहे हैं उनको शिद्दत के साथ करें और उसके बाद उसका एनालिसिस करने जरूर आना. दिस इज द वन थिंग दैट वी वुड सजेस्ट इन देयर. तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है दैट व्हाट इज द चेंजेस व्हिच इज हैपनिंग इन देयर, जो सबको पता है. अभी जो आपको नहीं देखना है, यू आर नो वे बॉदर्ड अबाउट इज how would the computation would happen in there. ये computation आपने नहीं, ये उन्होंने करना है. But हाँ, ये indicative था आपको बताने के लिए कि computation कैसे होगा. This is what been given in this entire document. There's nothing else been given in there, right, Vinisa? Sir, so thank you so much, sir, for taking us through the entire new change pattern. So eventually, sir, the thing is that the takeaway from this entire analysis, this introduction of the new pattern is that eventually the number of questions they have reduced to half. 60 questions हो गए 120 से. टाइम जो मैंने कहा कि टाइम 25% कम हुआ है, यानी कि 120 से 90 हुआ है, बट क्वेश्चंस 50% कम हो गए. 50%. और हैविंग सेड दैट, पहली चीज तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट डाइल्यूटिंग द पैटर्न. क्वेश्चन इजी नहीं होंगे, राइट, पहले से. और ये भी आप जान लीजिए कि समझ लीजिए कि 2011 में जब IIM इंदौर ने इस पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था, राइट, दिस इज 2020. क्वेश्चन को डाइल्यूट करके और क्वेश्चन को इजी बना करके बाय नो मींस IIM इंदौर वुड ट्राई टू डाइल्यूट इट्स गुडविल और ब्रांड. लेट मी टेल यू दिस, ऐसा नहीं होगा कि 2016, 17, 18, 19 में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया और अचानक से 20 में इस लेवल पे क्वेश्चन आ जाए. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इसके दो रीजन है. पहले तो एक IIM इंदौर,
It will definitely not try to dilute its brand and its goodwill. दूसरी चीज, you are getting more time per question. शॉर्ट आंसर में 3 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है, जो लास्ट ईयर 2 मिनट पर क्वेश्चन मिलता था, और यहाँ पे एमसीक्यूज में आपको 1.5 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है, जो लास्ट ईयर सिर्फ 1 मिनट का मिलता था, राइट? हैविंग सेड दिस, also the level of difficulty is not going to increase drastically, because they know very well that what the entire world is going through, what the entire education ecosystem is going through, and most importantly, what actually right now the exam conducting bodies are going through, right? This is very well known to them. They know it very well. इसमें आप ये भी मान करके चलिए कि अगर उन्होंने ग्रेस टाइम अपने लिए रखा होगा 5 to 7 minutes का, so that you can first adapt to the technology, adapt to the online environment, तो आप प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड. हो सकता है कि इन दिस 90 minutes they must have thought, because they are management people, right? वो basically मतलब वो those people who are organizing this, this entire examination, उनको 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है सर. हम सभी बच्चे उनके सामने. They know it very well. They know the mindset very well, right? And they have been conducting this for so long, for so many years. So basically, they take care of everything, right? आप comfortable हो जाए उनके environment में, आप technology से comfortable हो जाए, screen से comfortable हो जाए. There should be no lag, there is no error, and all those things. And after that, you can appear in the examination in a very conducive environment. That is the reason they have given, they have not reduced the time drastically. आप मुझे एक चीज बताइए, उनको क्या जा रहा था टाइम को 75 मिनट्स करने में? वो 75 मिनट्स भी कर सकते थे, वो 80 मिनट्स भी कर सकते थे, but they know it very well that after all the exam is going to be conducted for class 12 students, right? Everything needs to be taken care of, right? So basically that is the reason the question is not going to increase drastically in terms of level of difficulty. So far as cutoff is concerned, let me tell you this, कि percentage जो cutoff का होगा, that is not going to change drastically as well, right? वो भी change नहीं कर, क्योंकि level of difficulty नहीं change हो रहा है, तो cutoffs भी change नहीं होंगे drastically. +-5 आप कर सकते हैं, right? Definitely you can give it a benefit of doubt, but not very drastically. So this is what I want to say. Praveen sir, your take on the cutoffs? Correct, sir. I would actually echo what you have rightly mentioned in there. Sir, हम देखते आए हैं कि जो भी sectional का reference होता है, sectional cutoff वाला system होता है, that generally comes out to be between 20 and 30%, right? Generally 20 and 30% होता है, but overall वो निकल जाता है 55 तक, right? That's what we generally see in there. ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है सर, क्योंकि कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हैं, as you rightly mentioned, क्योंकि चेंजेस जंप कर पाना बहुत मुश्किल गेम है, और इस समय तो वैसे भी नहीं करेंगे, because everybody knows that we all are going through a turmoil in that. So वो 30% वाला ये चीज जरूर रखिएगा, 30% of a sectional cutoff, and for an overall also that should be more than a 51, right? ये तो सीधे आपको मान के चलना ही पड़ेगा, 50 से ऊपर लाना ही पड़ेगा, then only you will be the one. अगर आप overall score की आप बात करेंगे, out of the total score being given in there, I'll say I would not, I do not want to comment at this given point of time. एक बार मॉक लें आप लोग, और मैं उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि सर एक ओवरऑल स्कोर कितना आ सकता है, नहीं आ सकता. मॉक लीजिए, then come down to us. We'll have an analysis, video analysis हम हर हफ्ते करते हैं, and on Sunday also we'll be doing in there. Be the part of that. फिर उसमें बताएंगे कि इसमें कितना स्कोर आ सकता था और कितना रियलिटी में आना चाहिए. That can be done in there. बॉयज एंड गर्ल्स, एक और चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि आपको सेक्शनल स्विचिंग नहीं मिलेगी, आपको सेक्शनल स्विचिंग नहीं मिलेगी. दैट वुड रेफर टू फ्रीज्ड होंगे और उसी तरह से आएंगे. और अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें प्रेडिक्ट कर सकता हूं, एंड आई कैन डू अ लिटिल प्रोफेसी, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि तीनों सेक्शन जैसे फ्रीज होंगे, और अगर इन्होंने कैट वाला रेफरेंस और विंडो टाइप ही अगर रखा है, तो आपका सबसे पहले आएगा वर्बल, और उसके बाद आएगा आपका एमसीक्यू वाले क्वांट्स के क्वेश्चन, और उसके सबसे लास्ट में आपके आएंगे दोस 10 क्वेश्चंस व्हिच आर द पार्ट ऑफ इट. तो अब इस चीज को भी आप एक थोड़ा सा सोच के चल सकते हैं कि अगर आपके पास स्विचिंग के लिए अलाउड नहीं है फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, तो उसे आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे उसमें टाइम देंगे, क्योंकि वहां पे भी आपके 1 से 2 मिनट इसी शॉक में निकल जाते हैं कई बार. ओ गॉड, मैं तो इसमें सेक्शन स्विच ही नहीं कर पा रहा था, उधर तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि स्विच टू फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन वेयर इट इज नॉट द केस. सो इस बात को आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा. अगला पॉइंटर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सर, एक छोटा सा पॉइंटर इन है, मैं एक बार वर्बल का एक रेफरेंस इधर जरूर देना चाहूंगा. बॉयज एंड गर्ल्स, हर बार मैं IIM का एनालिसिस जब भी मैंने लिया है, और मैंने कहा है कि दैट IIM इंदौर, बिकॉज अब IIM इंदौर की बात है तो IIM इंदौर को आपको समझना पड़ेगा, उनका माइंडसेट समझना पड़ेगा. अगर इसको कोई और पेपर करा रहा होता, कोई और इंस्टीट्यूट करा होता, वी वुड हैव लुक्ड इनटू देयर माइंडसेट.
IIM Indore will have the questions on the basis of vocabulary and reading comprehension. तो इस बात को आप आराम से मान के चलो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं. एंड द सेकंड वुड बी वोकैबुलरी. ग्रामर मैं नहीं बोल सकता, आई एम नॉट मच इनटू दैट, बट एक चीज पक्की मैं बता सकता हूं, RCs अच्छे क्वेश्चंस आएंगे. करेक्ट? दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू अस्यूम इन दैट. Sir, all yours. Definitely, sir. Sir, that is the reason we need to mention this to the student again and again. And sir, as you very rightly said, कि IIM Indore में, right, उसके verbal ability का जो सबसे pillar होता है, foundation होता है, that is RC. It is so inference based. You know, आप CAT के level के RC और IIM Indore के level के RC में फर्क नहीं कर सकते सर. वो उसी स्टैंडर्ड का होता है. ऑथर स्टोन, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, यू नो, वेरी वेरी इंटरप्रेटेटिव, वेरी इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. एंड दैट इज द रीजन सर, मैंने हमेशा एक चीज देखा है कि आप एनालिसिस जब भी करते हैं, आप इस चीज पे बहुत फोकस करते हैं कि योर वोकैबुलरी एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग, सब्जेक्ट शुड बी वेरी एप्ट. आपको अपनी समझ पे ज्यादा ध्यान देना है रादर देन रीडिंग द पैसेज एंड डायरेक्टली आंसरिंग दैट. बिकॉज बाय यू नो, इफ यू आर हैविंग दैट हैबिट, जस्ट पैसेज पढ़ा और हम सीधे आंसर दे रहे हैं, so means definitely that will not work for IIM Indore. It might work for other examinations, but not for IIM Indore, right? And sir, सबसे बड़ी बात मैं स्टूडेंट के साथ भी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा. See, sectional cutoff ranges between 20 to 30%, right? अगर verbal ability की बात करें तो it might go up to 50%, right? So for verbal ability and for QA short answer, it will be around 25 to 30%, and for MCQ it will be 25%. लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. This is my personal experience, right? You know, being in this particular industry, what I have seen, कि students normally verbal ability को काफी lightly लेते हैं. इस ये सोच करके आज तक लेते थे. I hope and I just wish कि अब बच्चे उसको बहुत seriously लें. Reason इसका ये है कि last year तक mathematics was 60% and verbal ability was 40%. लोग सोचते थे ये तो हो जाएगा, मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना, 60% पार्ट होता है मैथ्स का. Surprisingly, most of the students who could not clear IIM Indore, they cleared the cutoff for short answer QA and MCQ QA. मैथ्स के दोनों ही सेक्शन का कट ऑफ क्लियर कर लिया उन्होंने. जब एग्जाम दे करके आए वो, उनसे पूछा गया कि हाँ भाई वर्बल एबिलिटी की बात बताइए कि वहां कितना कट ऑफ होगा, कितना आ रहा है आपका मार्क्स. Nobody said less than 100, sir. Out of 160, nobody mentioned that I'm going to get less than 100. सब कह रहे थे 102, 105, 107, 106. And at the end of the day, cutoff was 71 and the marks they secured was 69, 64, 63, 68, 59. Now they are in a panic situation कि sir marks चला कहाँ गया, right? That is the reason I am cautioning you people, right? That please take verbal ability and English very seriously. Mathematics में ज़्यादा लोग cut off clear कर जाते हैं but English में नहीं कर पाते. It is so subjective in nature. Mathematics में things are very objective. 2 plus 2 is not approximately 4. It is exactly 4. But in English, when it comes to English, थोड़ी subjectivity है और subjectivity को भी objectivity में convert करने के लिए there is a there are certain basic rules जो आपको RC के क्लास में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है. बिल्कुल सही. उसको आप subjectivity को भी objectivity में convert कर सकते हैं. So please take care of verbal ability part very very seriously. Correct. That's what sir we discussed in the class कि मैं जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वैसे इंग्लिश के अंदर स्टेंसिल्स होते हैं. वो स्टेंसिल सर एस बनाएंगे तो वैसा ही एस बनेगा. आपको बस वो स्टेंसिल समझना है कि कौन सा स्टेंसिल आपको कहाँ लगा के मेजर करना है. इट विल मोर लाइक अ वर्नियर कैलिपर, राइट? आपको इवन उसकी ब्रेथ भी पता लग जाएगी कि ये वास्तव में यही आंसर है कि नहीं है. तो इतना बारीकी से भी किया जा सकता है. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड सर. सो दिस इज टू बी एक्चुअली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट. सर एक और क्वेश्चन आ रहा है वेयर द स्टूडेंट्स आर आस्किंग वुड देयर बी सेक्शनल टाइमिंग फॉर IIM Indore? रुद्राक्ष, आई बिलीव इसमें अब कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं. यस देयर इज. डेफिनेटली सर. यस देयर इज. यस देयर इज. इनफैक्ट सर आपने एक चीज बहुत अच्छा प्रेडिक्ट किया जो कि इफ यू टेक द नोटिफिकेशन पार्ट, एक बार आप शेयर कर पाए सर नोटिफिकेशन को फिर से. श्योर सर, आई विल डू दैट. उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी, हियर इट इज सर. एंड सर हाँ सर ये देखिए, मींस टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स आई एम मेंशनिंग दिस कि इसमें अगर रिवाइज स्ट्रक्चर फॉर IPM एट 2020 एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 अब देखें, सेक्शन में पहले QA MCQ मेंशन किया गया है, फिर बाद में QA शॉर्ट आंसर, फिर वर्बल एबिलिटी. बट पॉइंट नंबर 5 कैटेगरिकली मेंशन करता है कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर द सेक्शन इन अ प्री स्पेसिफाइड ऑर्डर एंड दिस
order will remain the same for all the candidates. The above table, now the point to be noted, the above table does not indicate the final order of section in the test. Right? And as a norm, generally अगर आप CAT से उसको draw करें, जैसे सर ने जैसे ही बोला ना, it reminded me of the past things जो कि हम लोगों ने experience किया है. Prediction could be that you might get verbal ability question section first, right? But be ready for either section. Any sections के लिए mentally prepared रहिएगा, right? This is just a general guideline कि you might encounter verbal ability first, and I suppose that you would be happy, right? Most of you would be happy, but be mentally prepared for any section. Right, you might encounter any section. Sir, now I would like to थोड़ा सा जहाँ कट ऑफ्स की बात करते हैं तो एक मैं लास्ट ईयर का एक थोड़ा सा कट ऑफ शेयर कर दूं, उसके बेसिस पे बच्चे they can come to a conclusion. Although we are not going to discuss any sort of cut off in this thing because we don't have question paper. We have prepared the mocks which the students are yet to attempt this week. And in the analysis only we'll be giving them the any particular cutoff. But last year के basis पे आप थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ. You can come to a bit of some sort of conclusion. So this is what the old pattern of IPM Indore was. QA MCQ 40 questions 40 minutes, right? Now see what is the difference you are facing. Again मैं आपको यहाँ पे फिर से उसी चीज को repeat कर दूं, and I'm sorry if I'm being repetitive, but I think it's required. If I might mention out here कि यहाँ पे basically you are getting so यहाँ पे the thing is that you are getting 40 minutes of time, 1 minute per question. Then in the new pattern, now you are getting 1.5 minutes per question, right? In short answer, you were getting earlier 2 minutes per question. Now you are getting 3 minutes per question, and the verbal ability part remains same, right? 1 minute per question, right? Now coming to the cutoff part, so ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है. आपका हाथ तंग नहीं रहेगा. You will be having more time to attempt questions. So far as the cutoff is concerned, look at this was the cutoff 2018 और 2019 का cutoff आप देख सकते हैं. You can have a look at it. कोई बहुत ही water tight एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई कि cutoff यही रहेगा, but there is definitely flexibility, but flexibility इतना ज्यादा नहीं है कि standard deviation बहुत ज्यादा हो जाए. So 2018 में this was the cutoff, 2019 में this was the cutoff. This was 31 out of 160 it was. ये मार्क्स है बेटा. यानी कि अगर क्वेश्चन की बात करोगे, मैं 19 और 19 को कंपेयर कर रहा हूँ both in terms of marks and questions. So 8 questions out of 40 questions in MCQ. 40 में से सिर्फ 8 बनाना था सर, net correct in order to clear this sectional cutoff, right? But irony is that बहुत सारे बच्चे वो भी नहीं कर पाए. रीजन इसका ये है कि हम बार बार एनालिसिस में एक चीज को बताते हैं, राइट, कि दैट कौन से क्वेश्चन को बनाना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है. अगर आप कायदे से इस 40 क्वेश्चंस में जो 40 मिनट्स में करने थे, जो कि अब बेसिकली 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, कायदे से अगर इस 20 क्वेश्चंस में अगर आप ढंग से, राइट, बिकॉज यू हैव 30 मिनट्स ऑफ टाइम, शुरू के 2 से 3 मिनट का इन्वेस्टमेंट दे करके invest 2 to 3 minutes. Do not do anything in the initial 2 to 3 minutes. Just look at the entire section. In the initial 3 minutes, that is the investment. 3 minutes, the initial 3 minutes would be the investment, as in how come I am going to spend my next 27 minutes. That will be a big investment. अगर आप उसके शुरू के 3 मिनट में ढंग के इस 12 में से 20 में से अगर 12 क्वेश्चन चूज कर लें और इस 12 क्वेश्चन को 12 क्वेश्चंस को अगर नेक्स्ट 24 मिनट्स में आप बना दें, there is a very high possibility कि इसमें से हो सकता है कि आपके 10 questions correct हों और 2 question wrong हो जाएं. Look at the marks you will be securing. 10 4 जा 40 and -2, that will be 38. You are getting 40 out of 38, right? आप देखिए कट ऑफ कितना गया था, 20%, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? You are getting almost, right, sorry, 38 out of 80. It will be 80 out of 38. So how much you are getting? You are getting at approximately 50% marks. आप के approximately 50% marks आ रहे हैं. So इसमें सबसे important चीज है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन
plays a very very important role. Look at the short answer. Short answer में लोग थोड़ा comfortable इसलिए होते हैं कि 20 was the cut off 2019 में, right, marks में. So 20 out of how much? 20 out of 80. In terms of number of questions, right, 5 questions बनाने थे 20 में से. सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 20 क्वेश्चंस में से in order to clear the cut off. It was so easy, but many could not do. मैंने आपको कहा कि 3,500 बच्चों के तो नेगेटिव मार्क्स थे, 3,000 बच्चों के सिंगल डिजिट में मार्क्स थे. इससे सिंपल सा एक चीज मुझे समझ में आता है कि अप्रोक्सीमेटली 19,000 या 20,000 बोलूं, 20,000 स्टूडेंट में से 40% जो स्टूडेंट्स थे वो एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉन सीरियस स्टूडेंट थे. उनको पता ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, वो टाइम पास के लिए बैठे थे एग्जाम में. You know, getting negative marks or getting marks in single digit, is that a joke, right? So basically this 20, अगर आप 80 का 20 करें, it is 25%. यहाँ पे कट ऑफ गया था 20% approximately, here the cut off is 25%, right? All you have to do is कि last year 20 questions थे, इस बार 10 question होंगे. इस 10 question में से आपको कायदे से, ढंग से 5 से 6 question select करना है और उसको बना डालना है. That's all, right? 5 से 6 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना है और उसको बना देना है. और सबसे बड़ी बात क्या है, you have how much time? You have 30 minutes of time. आपके पास 30 मिनट का टाइम है एक 6 क्वेश्चन बनाने के लिए करेक्टली. मुझे एक चीज बताइए, 6 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 10 के 10 नहीं बनाने सर, आपको 6 क्वेश्चन करेक्टली बनाने हैं. 30 मिनट्स का टाइम है, यानी पर क्वेश्चन 5 मिनट्स. मुझे एक चीज बताइए कि कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हिंदुस्तान में है जो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट का टाइम देगा? Tell me one single entrance examination. It is nothing but IPM Indore, right? So अगर आप इसमें 6 क्वेश्चन करेक्टली बना देते हैं तो definitely out of 40 marks you are at 24, और suppose 7 बना देते हैं you are at 28. You are sure to clear the cut off. दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कट ऑफ क्लियर करने से. And when it comes to verbal ability, जहाँ verbal ability की बात करें तो basically out of 160 it was 71, right? It is approximately 16 4 64, 45% के आसपास हो गया. All you need to do कि इस बार जो 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 इस बार जो 30 क्वेश्चंस होंगे, राइट, 30 क्वेश्चंस होंगे. 30 क्वेश्चंस में से आपको कायदे से, ढंग से, राइट, आपको 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, राइट, और इसमें से 16 to 18 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने in 30 minutes. Now let me tell you one thing. लोग सोचते हैं सर 30 क्वेश्चंस से 30 मिनट्स है. No, that is wrong. You are not supposed to solve all the questions. No, आपको सारे क्वेश्चंस बनाने ही नहीं है सर. The moment you solve all the questions, you will be a superman. You will not be a human being then. आप सुपरमैन की कैटेगरी में आओगे, या फिर might be you know some other super being and also some supernatural power, right? 16 to 18 आप ये मान करके चलिए कि आपको इसमें 18 क्वेश्चन ही बनाने हैं, and for that 18 questions you have 30 minutes of time. How difficult it is? It is approximately 2 minutes per question you are getting. And that is the reason we always say, I and Praveen sir always say that for this examination you have to have a specific strategy, you have to have a specific action plan, and more than that you have to have a specific sort of planning supported by a lot of practice on this pattern. This is what is the need of the hour, right? Praveen sir, any additions on this sir? सर हिंदी में एक मैं जब कविता पढ़ता था तो हमें लिखना होता था गागर में सागर. तो सर पिछले जो 5 मिनट में हुआ वो गागर में सागर हुआ है. एंड आई थिंक इसके बाद कोई भी और वर्ड वुड जस्ट बी अ वेस्टेज बिकॉज दैट्स बीन ब्यूटीफुली बीन एक्सप्लेन्ड बाय यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. So guys, I hope कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा स्ट्रेटजी का, and further we'll be coming up with the specifics of cutoff when the new pattern arrives and you attempt the new pattern mocks, right? तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. Now I would like to take specific questions which you have. So again, the question that they're talking about is about the DI. So one of the question is, sir, what about DI? Do we expect any DI questions in quants? So DI, definitely DI has been traditionally, let me tell you students, traditionally DI has been part of this MCQ section. इस MCQ के सेक्शन में जो 40 क्वेश्चंस होते थे, इसमें 5 to 6 क्वेश्चंस DI पे बेस्ड होते थे. इस बार 40 को रिड्यूस करके 20 क्वेश्चंस कर दिया गया है. 20 में से you can definitely expect 1 question, 4 to 5 questions either from a logical reasoning, जो बेसिकली आपको टेबल प्रिपेयर करना होगा, सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, या नॉर्मली, या फिर DI से आप कंपेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देखिए रीजन इसका ये है कि you cannot expect large number of questions on LR and DI because इसी 20 questions में
IIM Indore has to accommodate both the higher maths as well as basic mathematics. Basic maths भी इसी में accommodate करना है, higher mathematics भी इसी में accommodate करना है, DI को भी इसमें ही accommodate करना है. So you cannot expect more number of questions on DI. Traditionally भी ऐसा ही होता है, right? So far as short answer is concerned, short answer में it's very unlikely कि वो DI पूछेंगे. Reason इसका ये है कि 10 ही question है सर. अगर आप mathematics के अगर 10 टॉपिक कायदे से उठा लो, क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर शॉर्ट आंसर में है तो बाय डिफॉल्ट उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हायर मैथमेटिक्स. फंक्शन से होगा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से होगा, प्रोबेबिलिटी से होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से होगा. दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से, और बाकी जो क्वेश्चन बचे वो बेसिक मैथमेटिक्स में होंगे. दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से दैट क्यूए शॉर्ट आंसर में DI या LR is bit unlikely, but MCQs में definitely you can expect and you should be mentally prepared to witness 4 to 5 questions on data interpretation or logical reasoning. And the rest 15 questions will be on proper basic maths plus higher maths. Yes, sir. Okay. So Rashi is asking, will we have a webinar for DUJAT also? Rashi, we have already conducted several webinars in there. What exactly are you looking for? I would request if you can talk to our customer care number. We'll be more than happy to assist you there. And you will get a one-on-one counseling for that as well. So we would be more than happy to help you out. So, sir, another question for you is, how about statistics? What kind of questions and how many questions can we expect? So, statistics is one of the favorite topic for NARSI Monji examination. NARSI and PAT के examination में वो भर के स्टैट्स पूछते हैं. इनफैक्ट IP कॉर्नर्स के एग्जाम में भी स्टैट्स पूछते हैं. वो स्पेशल सीरीज भी पूछते हैं, टेलर सीरीज एंड ऑल दोस थिंग्स. सो फार एज IIM Indore इज कंसर्न्ड, आई वुडंट से दैट क्वेश्चन स्टैट्स पे नहीं आए हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, बट बहुत ही कम क्वेश्चन स्टैट्स पे आए हैं ओवर द इयर्स. इन द लास्ट 9 years, राइट, हमने जो 9 साल देखे हैं IPM के पेपर्स को, तो स्टैट्स से you will hardly find very few questions, बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे. एंड दैट क्वेश्चन विल बी पर्टेनिंग टू स्टैंडर्ड डिविएशन, variance and all those things. तो स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस वगैरह में पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, इस पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं. बट क्वेश्चंस वुड बी लेस. अगर इस बार आता भी है MCQ में, अगर पूछा भी जाएगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट नॉट मोर देन 1 or 2 questions, अगर इफ एट ऑल इट कम्स. So, sir, if we similarly go for the higher mathematics, how many questions should we be expecting in there? Sir, both the sections, so far as this, this MCQ section is concerned. Correct. Sir, approximately, if I may show you this, let me share something with students. कि देखिए वेटेज कौन से सेक्शन की क्या होती है. So look at this. शॉर्ट आंसर में क्या क्या पूछा गया था लास्ट ईयर, और जनरली आप पुराने ईयर्स के पेपर को भी उठा करके देखो तो दिस इज द वेटेज, राइट. शॉर्ट आंसर में इफ यू लुक एट द अलजेब्रा पार्ट, द बेसिक मैथमेटिक्स, अगेन इसको मैं बेसिक मैथ्स कहूंगा. नंबर्स इज बेसिक मैथ्स, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हायर मैथ्स, HM, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बेसिक मैथ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री हायर मैथ्स, अर्थमेटिक बेसिक मैथ्स, लॉगरिथम पार्ट ऑफ हायर मैथ्स, सीक्वेंसेस सीरीज को भी हायर मैथ्स में आप काउंट कर सकते हो. वेन डायग्राम बेस्ड ऑन दैट आई वुड से दिस सेट एंड रिलेशन, राइट, सेट फंक्शन एंड रिलेशन. तो आप देख सकते हो अगर हायर मैथ्स बोलो 3 + 3 6 + 2 8 9 10 अप्रोक्सीमेटली 50%. और हर साल विदाउट फेलियर ये होता है हर साल. कभी एक बार मैंने देखा था कि लॉगरिथम से काफी क्वेश्चंस आ गए थे, जो लॉगरिथम से 2 थे. लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर में भी थे, लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस आपको MCQ में भी थे. प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको MCQ में भी दिखेंगे. प्लीज ये मत समझिएगा कि ये टॉपिक्स पूछ दिया गया शॉर्ट आंसर में तो MCQ में नहीं आएगा. सर MCQ में भी यही रहेगा, राइट. So approximately आप देख सकते हो 50% of the short answer will be higher maths and 50% will be basic maths, right? When it comes to MCQ part, sir, when it comes to MCQ part, ये मैंने jot down करके रखा है sir, this part 18 questions out of 40, approximately 50% आप कह सकते हैं, approximately 45 to 50% questions इन 7 टॉपिक्स से थे. Permutation combination, probability, functions, coordinate geometry, trigo, sequences series, logarithm, which you can say as higher maths. So again you can say that definitely कि higher maths के 50% question थे. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं DI के 5 question थे यहाँ पे, and that is the reason on the basis of this I am saying कि इस बार भी अगर 20 question होते हैं MCQ में, 20 questions, तो 4 to 5 questions आप expect कर सकते हो DI से या logical reasoning से, right? बाकी के तो आप देखिए सर 18 and 5 is 23 and rest 17 questions
was from basic maths. अब मैं दोनों ही सेक्शन को एनालाइज करूं, शॉर्ट आंसर को एंड एमसीक्यू को, तो मैं ये बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूं कि 50% ऑफ द वेटेज इज फॉर हायर मैथ्स एंड 50% वेटेज इज फॉर बेसिक मैथ्स इन बोथ द सेक्शंस. करेक्ट. And sir, ये तो इनका करना बनता भी है because the kind of maths questions that they're talking about higher mathematics which has been utilized in day-to-day functioning, जो इस तरह की वो चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने प्री क्वालिफिकेशन मैथ्स नहीं रखी है, तो एटलीस्ट इसमें तो पूछेंगे ही ना, because then only the student will be selected in there. Yes. So that surely makes sense. So sir, another question is, how many questions in reading comprehension do we expect? So to answer that question is, reading comprehension may say, let's expect 4-3. 3 passages, 4, 3, 12, correct. So there would be 3 passages around that you can expect in 12 questions. Right. So I think देखिए सर ने वही चीज बताई है, reading comprehension में कितने questions when you expect. अभी भी मैं सर 12 ही बोलूंगा. Now also, even if it is 30, I'll still say reading comprehension would obviously be on a higher side, and they'll be taking around 12 questions in there. 12 question अभी भी आप reading comprehension की उम्मीद कीजिए, पक्का आएंगे. उसके बाद कौन सी चीजें आ सकती हैं? May not parajumbles, parajumble 1 या 2 आए, but vocabulary is something that can be done there. एक और चीज मैं आपको बता दूं, boys and girls, reading comprehension will not be just the fact-based questions. IPM Indore is primarily famous for the inference-based questions and the theme-based questions. Inference वाले जो अभी विनीत सर ने कहा था that it may differentiate from a person to person, but again आंसर तो एक ही आना है ना, 4 आंसर तो वैसे नहीं आ सकते, so there has to have one answer in there. उस type के questions, those are known as inference based questions that we have been doing in the class. The same kind of questions that you expect. 12 questions is what that I'm saying for the reading comprehension, and I also expect the remaining questions should come from some form of vocabulary and some 3 to 4 questions that you may have with the parajumbles. Grammar में ज़्यादा expect नहीं करूंगा with respect to IPM Indore per se. Phrasal verbs, Jia, if you're talking about phrasal verbs, yes, phrasal verbs is the part of your vocabulary as well as it may be the part of your reading comprehension. Because अगर reading comprehension में उन्होंने कुछ दिया, for example, going on the block, right? So and then they say what has happened to X. So you would not know. This can be the part of the reading comprehension. तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि सर phrasal verb आएगा कि नहीं आएगा. इसका कोई isolation factor नहीं होता कि सर grammar नहीं आ रहा तो नहीं आएगा और vocabulary नहीं है तो नहीं आएगा. Nothing of such variety. It can be the part of understanding per se. Problem ये है reading comprehension या English पूरे verbal section के साथ problem ये होती है, देखने के लिए एक आरसी होता है. Let me say there's only one reading comprehension, मगर उसको support करने वाले there are 50 elements. 50 elements उसको support करेंगे for a one reading comprehension. तो they generally students believe कि शायद phrasal verb नहीं आएगा in order to understand that particular element. So therefore it would be the one again. 5 questions, yes, phrasal verbs. So that's what I'm saying, Jia. You would expect questions from phrasal verbs as well, but that will not be a direct questions, but you will be getting questions with respect to the reading comprehension. उसके अंदर पिरो के अच्छे से आपको एक माला बना के उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे. इस बार मुझे नहीं लगता कि आपको एक एक मोती करके पूछा जाएगा कि ये वाला मोती बताइए कौन सा है. नहीं, there will be a complete garland and from there you are supposed to derive something. That's what we expect. So there's a question for you which says that for higher maths, can we solve BMS handouts? So this is I base whosoever has asked this question, I guess Riya Bagga has asked this question. So let me tell you this. If you are a student of Pratham, this question was not very relevant to me. The reason इसका ये है कि आपको approximately 5.5 months का time मिल चुका है, right? 5.5 months का time हो चुका है. Studying QA, verbal ability, logical reasoning, general knowledge and current affairs, right? And I do believe and I do presume that आपने knowledge primer, all the class handouts, all the class exercise, all the home assignment, right? At the same time higher mathematics की booklet, IPM Indore की जो special booklet है और BMS special की जो booklet है, ये सारी चीजें आपने खत्म करनी होंगी. ये मैं प्रेज्यूम करता हूँ क्योंकि आपको 6 महीने का टाइम मिला था, 5.5 महीने का टाइम मिला है. रीजन इसका ये है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जनरली व्हाट हैपेंस सो फार एज IPM Indore इज कंसर्न, कि जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट ईयर you know, people started in the crash batch, they started preparation around 26th of March.
and IPM Indore happened around 10th of May, 10th या 11th of May, right? 11th of May, right? 26th of March से 11th of May, आप days count कर लीजिए बेटा, 5 दिन यहाँ पे हैं, 30 days April के, 35 days and 10 days यहाँ के हैं, 45 days. In 45 days, they studied for approximately 240 hours, 240 plus class hours, plus at least 150 hours of self-study, right? And then they cracked the IIM Indore examination. ये करके उन्होंने क्रैक कर लिया. आपको टाइम मिला है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं 25 मार्च से अगर काउंट करूं, 25 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड टुडे इज 31st of August, यानी कि 155 डेज हो चुके हैं आपको प्रिपेयर करते हुए, एंड यू हैव अप्रोक्सीमेटली 900 आवर्स ऑफ क्लास. प्लस मैं प्रिज्यूम करता हूं कि कम से कम आपने 400 घंटे की सेल्फ स्टडी भी की होगी, राइट? So if, and this message is to everybody. Now, by any means, by any chance, by any logic, by any excuse, you cannot say that why we should not crack this examination. या फिर सर हमारा ये नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया, या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ. अगर वो नहीं किया आपने, तो that is entirely your fault, right? You have more than sufficient time to revise all these things. नॉर्मली आज तक जितने भी बैच, जितने भी स्टूडेंट्स IIM इंदौर गए हैं, वो 45 डेज का क्लासरूम प्रोग्राम करके एंड देन दे क्रैक द एग्जामिनेशन. यू गॉट 155 डेज इफ यू आर अ प्रथम स्टूडेंट. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ यू, राइट? सो फार एज हायर मैथ्स इज कंसर्न्ड, व्हाई ओनली BMS स्पेशल? व्हाई नॉट द हायर मैथमेटिक्स बुकलेट? Why not the IPM special booklet जहाँ पे कि higher mathematics बहुत ज़्यादा दिया गया है? Why not all the class assignments? Why not all the home assignments of higher mathematics? Why not all the class exercise of higher mathematics? Why not all the BMS special handouts of the higher mathematics? Everything needs to be done. Let me tell you this. Yes, sir. So that's okay. So Sai, so what about the JAT IPM clash? Sai, I think you are late for the session. We have already discussed about that, where Ankit sir has categorically mentioned about that. अगर कोई ये clash है, इस clash में आप और मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते. We cannot do anything. The only thing that we can decide is which paper to appear for, and in case we can appear for both the papers, very good like that. But if we cannot, if we can appear for only one paper, या आपको decide करना होगा कि किसके अंदर जाना है. और इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने शुरुआत में बात की थी. अंकित सर ने, विनीत सर ने, मैंने हमने बताया था कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जाते हैं आपको डिसाइड करने में, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट यू नीड टू कंसीडर इन दैट. तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी की थी. I guess really sir, Sai was late because Sai says, oh apologies sir, he was late for the session. Correct. So he was late for the session. Second, non-math students have disadvantage in IIM Indore. मानव, पहले मुझे ये क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर मैं विनीत सर को जरूर क्वेश्चन ट्रांसफर करूंगा. मानव, जब उन्होंने ऐसा कहा है, when there if you are a प्रथम स्टूडेंट, तो मुझे नहीं लगता आप नॉन मैथ और मैथ में कोई डिफरेंशिएशन रह जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रथम स्टूडेंट. नंबर 1. Number 2, what you need to understand is the kind of questions that they are asking is not the variety of questions that you get in your bachelor's degree, in your 12th standard, right? आप 12th standard में जो questions करते हैं, वो question तो है ही नहीं. It's only the basis been picked in there, but these are different variety of questions coming there. Vinit sir, I hope I am making sense for that. Definitely, sir. They are not asking, 1.5 answer for integration, differentiation, and functions, right? They are not asking the question based on R.D. Sharma or what they ask in the board examination. What they are looking at, अगर वो higher maths के questions भी देते हैं, sir, the answer is just 2 to 3 step process. राइट, वो 2 से 3 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन होता है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सर हायर मैथ्स के जो कि आप विदाउट इवन यूजिंग पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं. ओनली थिंग दैट योर कॉन्सेप्ट एंड योर लॉजिक हैज टू बी क्लियर. वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन लुकिंग एट द लॉन्ग आंसर्स. करेक्ट. Okay, Rinshul, if you're talking about the RC length would be shorter, 350 to 400 words. इससे ज़्यादा आपकी length नहीं हो सकती है, because generally they give 350 to 400 words in there. But yes, passages may range from anthropology to philosophy to psychology to polity to understanding of the nemesis. It can refer to anything and everything in there. इसीलिए हर बार क्लासेस में आके हम लोग हर समय कहते थे न्यूज़पेपर. एटलीस्ट यू शुड हैव अ फ्लेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, राइट?
एक बार फ्लेवर होगा फिर आप चूज कर सकते हैं कौन से आरसी में से कौन से क्वेश्चन करने हैं. अगर आपके पास फ्लेवर ही नहीं है, आपके पास बेस ही नहीं है, then it becomes a little difficult task for us to get into them. Another question is, sir, vocabulary में can I expect some kind of a synonym antonym questions? What you need to understand here is they will give you, according to me, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे नए वेराइटी के आपको देंगे, the one which may be form of a googly for you. But if you are a Pratham student, हमने सभी variety of questions किए हैं, whether it is the BMS handout, whether it is an IM handout, whether it would refer to as a special classes that we have done in there, we have done all variety of questions. अब question देखने के बाद आपको, if you are a Pratham student और आपने सारी exercises किए हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई shocker मिलेगा. हाँ, ये जरूर हो सकता है that the question may not be a doable variety or doable variety that you may have to decide in there, or you may have to go to tier 2 to understand that, right? That can happen in there, but मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा shocker मिलने वाला है. Correct. I guess so, Manav Mehta is asking weightage for higher mathematics in IPM Indore. He is again, I guess, he is late for the session because हम लोगों ने categorically चीजों को बताया था. मानो मैं आपके लिए कह देता हूँ कि इस बार total 60 questions होंगे and 30 questions will be from QA, 30 questions from verbal ability. That means maths this time, unlike last year, जो last year 60% weightage होता था, this time maths is going to have 50% weightage. So, sir, I believe we have answered all the questions in there, yes, and students have got the entire picture. I think barring 1 or 2 questions. Where only last question, sir. One question Rashi is asking: there's a what should be the strategy for this week? All yours, sir. Sure, sir. If you're talking about strategy for this week, would be appearing for the 2 mocks. पहले तो mocks को दीजिए और इनका एनालिसिस अच्छे से कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक दिया, उसके बाद 3 घंटे का एनालिसिस होगा. हिंदी में भी सुन लीजिए, 3 घंटे का आप खुद से एनालिसिस करेंगे. दूसरी बात, listen to this in English, that you're going to analyze the entire paper for 3 hours with you, only you, and looking into the questions. And then you're supposed to identify where exactly was the problem, correct? And then coming down to the live analysis that we may have in there, Bineet sir and I would be the part of it. उसके अंदर फिर आपको ये देखना है कि जो आपने चीज सोची थी और जो चीज हम बता रहे हैं, अगर वो 75-80% मैच करता है, bingo, you are on the right track. You are on the right track. Bineet sir, your take on that, please. Sure, sir. Definitely. Means this last 1 week, eventually you have, 7th is Monday. So you have 6 days of time. 6 days का मतलब ये होता है simple sir 144 hours. They have 144 hours of time. इसमें मैं ये बिल्कुल आप लोगों से expect ये करूँगा कि if suppose you sleep for 8 hours a day, so 8 6 या 48, 144 में से 48 minus करें तो 96 hours of time you have. इस 96 hours time में से out of whatever time you have 96 hours में से मैं आपसे एक्सपेक्टेशन जरूर रखता हूँ कि आप मिनिमम 70 और 75 आवर्स का टाइम आप स्टडीज को बिल्कुल डिवोट करेंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर गोइंग टू कैरी ऑन विद दिस शेड्यूल फॉर अनदर 2 months or 1 month. वो बहुत टीडियस हो जाता है, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 days यू कैन डेफिनेटली मैनेज इट. यू कैन डू इट. आपको दुनिया को भूल जाना है, भूल जाइए 6 दिन के लिए. आपको सपोज करिए अपने आप को बिल्कुल झोंक देना है पढ़ाई के लिए, बिल्कुल झोंक दीजिए सर. लेकिन बट एक चीज है, कीप रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स. एक चीज हमेशा याद रखिए, आपने लाख पढ़ाई की हो बट आपने रिवीजन नहीं किया, सो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है. राइट? इट इज एज गुड एज नॉट स्टडिंग एनीथिंग इफ यू हैव नॉट रिवाइज द स्टफ्स. सो रिवाइज कीजिए. कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू शुड नॉट गो फॉर सम न्यू स्टफ. यू शुड नॉट स्टार्ट समथिंग आउट ऑफ द ब्लूज. कुछ भी नया सीरीज से शुरू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर हैज मेंशन्ड, मॉक्स दीजिए सर. मॉक्स आपको ये बता देता है कि आप कितने पानी में हैं. ऑनेस्टली मैं बता दूं, आप अपने बारे में कुछ भी सोचें कि आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, आई एम वेरी गुड इन फंक्शंस, आई एम वेरी गुड इन मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, मैं बड़े बड़े इंटीग्रेशन बना सकता हूं, डिफरेंशिएशन बना सकता हूं, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे या उसके बेसिस पे बने हुए मॉक्स जब आपके सामने आएंगे, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू जज योरसेल्फ. मॉक्स इज अ वेरी बिग टूल to analyze that what is the current standard of preparation. Please appear in the mocks and keep revising the stuffs. So this is all I want to contribute in this. Good, sir.
सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं जरूर लेना चाहूंगा. मानव हैज गॉट एन रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? और उन्होंने ये साफ साफ ये पूछा है, सर मेरा रोहतक में नहीं हुआ, क्या मैं इंदौर में चांस देखूं कि क्या मेरा हो पाएगा? नाउ दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन. विनीत सर, आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. अगर मेरा रोहतक में नहीं हुआ तो क्या इंदौर में हो जाएगा? सर डिपेंड्स कि मानव के पास अभी ऑप्शंस और क्या क्या हैं, राइट? अगर आई एम इंदौर के अलावा इनके पास कुछ और ऑप्शन है, सपोज ही कैन अपीयर फॉर DUJAT और ही इज गोइंग टू अपीयर फॉर IP BBA एंड ऑल, अगर ये इनके हाथ में है तो बहुत अच्छी बात है. बट मानो, कुड यू प्लीज टेल मी, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मानो आपने कितने मॉक्स दिए हैं अभी तक IPM के, और उस मॉक्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? आप मार्क्स को एनालाइज कीजिए. द आउट ऑफ 400 मार्क्स हाउ मच यू आर गेटिंग इन द मॉक्स कंसिस्टेंटली, और उसके बाद आपको ये सवाल मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा. चांस है या नहीं है ये आपका परफॉर्मेंस बताएगा इन द मॉक एग्जाम्स. Correct. So, Manav, I hope you would have got the picture of what Vineet sir has beautifully mentioned in there. ये depend करता है आपके preparedness के ऊपर. One, number two, मानव, अगर आप इस context में पूछ रहे हैं कि मेरा तो रोहतक में तक नहीं हुआ, तो क्या इंदौर में हो जाएगा? अगर आप उसको इस तरह से पैरामीटर मेजर कर रहे हैं, ये कोई मेजरमेंट का क्राइटेरिया नहीं होता है. तो आई मीन, अगर मेरा खुद का एक फेसबुक अकाउंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर्स में सक्षम नहीं हूं या मुझे सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता. ये दो अलग अलग बातें हैं. आई एम रोहतक वाज अ डिफरेंट डे, डिफरेंट मूड, डिफरेंट स्टाइल. नाउ आई एम इंदौर इज अ डिफरेंट मूड, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट पेपर. ये दो अलग अलग चीजें हैं. दोनों चीजों को, अनकंपेरेबल एलिमेंट्स को कंपेयर मत कीजिए. करेक्ट? सो इसमें कोई डिफरेंशिएशन को मैं नहीं मानूंगा कि दोनों चीजें कोई कंपैरेबल है बाय एनी चांस. बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, राइट? दूसरी चीज सर, मानव ने फिर बाद में मेंशन किया है, सर आई वाज टॉकिंग अबाउट द PI बिकॉज उन्होंने रोहतक का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया शायद. आई गेस ही क्लियर्ड द रिटन, राइट? सो मानव, ये क्वेश्चन आपका, यू आर सेइंग दैट शुड आई टेक अ चांस इन आई एम इंदौर. इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको तभी दे पाएंगे जब एक बार आप रिटन राउंड क्लियर कर पाए तब. Correct. ये this will be a too early stage to answer this question कि PI, how should you conduct in PI? Correct, Manav, and also you know that IIM Indore does not have an interview. Bingo, relax. It doesn't have an interview. It has got a video assessment round, right? वो video assessment क्या होगा, चिंता नहीं. If you're the part of Pratham, stay. We are there with you. I personally will help all the students out. I'll personally would come into the picture. Don't worry about these issues in there. ये बात की बातें हैं. पहले अभी मॉक ये पेपर आता है, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी. Okay, so one last question, I sir. Purva is asking a question, sir. If you're not good at in GA, but we believe that we can prepare for Indore, should I give Indore? Yes, Purva, I believe that would again be dependent on इसका GA के साथ कोई relationship नहीं है. It's an irrespective of a GA is good or not, but it is all about whether you are prepared or not, right? That's important in that. And the preparedness का parameter, I think Vineet sir ने आपको आज बहुत ही अच्छे से बता दिया. उसका parameter है सिर्फ एक element, MOCKS. There's nothing else beyond that. Mocks आपके पैरामीटर हैं जो आपको बताएंगे whether you should be going for that. More so, sir, पूर्वा के साथ I'll also ask, like to ask one thing, that if you are asking here, should I give Indore? Purva, what other option you have? The second option you might be having is, DUJAT. And you are mentioning that you are not good in GA, general awareness. You never mentioned, आपने ये भी mention नहीं किया that how good you are in maths and how good you are in English. ये आपने mention किया नहीं, आपने GA की बात कर दी. पूर्व मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन GA, अगर आप एवरेज हो 25, अगर DUJAT की बात करूं, DUJAT में 25 क्वेश्चंस में से इफ यू आर एबल टू सॉल्व 14-15 क्वेश्चंस करेक्टली, एंड इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन LR, very strong in QA and very strong in verbal ability, then DUJAT is also one of the options for you. You cannot discard that outrightly, right? So इंदौर के साथ साथ वो भी आपके पास ऑप्शन है. अब आप ये डिसाइड कीजिए अपने मॉक्स के बेसिस पे कि ज्यादा कंफर्टेबल आप किस में, इंदौर में या JAT में, एंड देन यू डिसाइड योर ऑप्शंस वाइजली. Correct. Renshul, if you're talking about when the mock would be released, please keep an eye on a PSIS. It should release soon as possible. By tomorrow, I think should be in a position to get into the new mock in there. आ जाएगा. Be prepared for that, and that is what we are expecting.
Sir, I believe we have answered all the questions here, and no more questions that are coming down here. I think there are some people who are joining in late. They can surely watch the video again, and in this video they'll be in a position to identify what all value additions that you have made to it. वो सारी चीजें पता लग जाएंगी. I think these are again the repeated questions, sir. Yes, sir. Definitely. Correct. So with this, we wind up the session, sir. Sure, sir. Students, that was a wonderful interaction again. And in case you have any of the question which has been left with you, please make sure to send us your information or directly call at the helpline numbers, and we'll be more than happy to assist you on with this respect. But the last thing before we depart in there, I would request Benny sir to say just few words before we depart and we finally end up this session. Benny sir. Sure, sir. So basically, one quick answer. Manav Mehta is asking, sir, are the steps considered in QA short answer question? QA short answer question, you have to fill up the blanks with the answers only. You're not supposed to write the steps in detail. Nobody is going to, or nobody would be having access to your steps, right? So numerical values आपको लिखनी है, so far as short answer is considered. Now, before we call it a day, the only final words of suggestion to you is that सबसे पहली चीज एक हमेशा याद रखिए कि एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, राइट? बहुत बार मेरी और प्रवीण सर की जो व्हाट्सएप पे हम लोग आपस में चैट करते हैं, जैसे मैंने कल उनको अपडेट करने के लिए मैसेज किया था कि सर टुमारो 7:15 वी आर हैविंग दिस सेशन. तो मैं जब उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजता हूँ तो मैं उनके स्टेटस मैसेज को पढ़ता हूँ. एक बार मैंने पढ़ा, यानी कि वंडरफुल स्टेटस मैसेज इन्होंने ही हैज पुट दैट गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा, राइट? So please understand one thing, examination is not the end of everything. It is a tool to achieve or to basically attain your dream. It is just a tool, right? So please हमेशा एक चीज याद रखिए कि do not surrender or do not panic before anything, right? ये examination है, be yourself, be well within your control, right? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, अगर आप डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो, and you are very determined for success, no force in this world can stop you. Have faith upon you. खुद में बिलीफ रखिए, खुद में बिलीव कीजिए. खुद पे विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है. दूसरों पे विश्वास करने से ज्यादा खुद पे विश्वास करना is the most important thing. You have 6 days of time. Give your best shot. Practice well. Mocks दीजिए, चीजों को रिवाइज कीजिए. Again, I am saying revision is very very important. अगर आपने रिविजन नहीं किया, it is as good as studying nothing. ये रिवीजन का ये इतना इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा महत्व होता है, ये इंपॉर्टेंस होता है रिवीजन का. एंड प्लीज अगेन वंस अगेन अपीयर इन ऑल द मॉक्स. एंड एक चीज हमेशा याद रखिए, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक. नथिंग ग्रेट इन दिस वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म एंड ऑप्टिमिज्म. बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी एंथुजियास्टिक. बच्चे में जो एंथुजियाज्म होती है किसी चीज को लेकर के ना, वो एंथुजियाज्म आपके अंदर में एग्जाम्स को लेकर के होनी चाहिए. एंड देन टेक माय वर्ड्स फॉर इट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. So, all yours. Thank you, sir. Thank you, Benny sir, for such kind words in there. And I'm sure the students are now pepped up to appear for the mocks and get the things right in there. So, students, that was the analysis for the day. And we will catch you in another video where we would be doing the analysis for the new IIM mock pattern questions in there, right? Till then, we take your permission. Thank you. And in case of any trouble, call us up. We'll be more than happy to assist you. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thanks a lot. Bye-bye, Thank sir. you, everybody. Thank you. Namaskar. Thanks, everybody, and all the very best. Bye-bye.